Let's begin with a breaking update coming in from the national capital of an unclaimed bag that was found on the road right outside the Delhi State BJP office that triggered an alarm among officials. Investigation right now is underway at the spot, but you can see all necessary precautions being taken. That entire area surrounding the bag has been cordoned off till there is a proper investigation as what really is inside the bag, the contents of that bag. Now, the information we have is that there's a police sticker on this bag. There is a suspicion that someone left it behind, but obviously considering that it is at a very sensitive location right outside the BJP office, officials are taking all necessary precautions, cordoning off the area, not allowing anyone close to that bag, and right now waiting for the necessary officials to reach there to probe the contents of that bag. Remember that the reason that you're seeing this level of precaution is because in the last few weeks you have seen 2 to 3 incidents of minor blasts being reported in the national capital. Himanshu Mishra is joining us with more details on this. Himanshu, can you get us the latest updates? अब तक जांच में क्या निकला है इस बैग के बारे में? देखिए, अब तक जो जानकारी है, सबसे पहले तो पुलिस ने उस बैग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, क्योंकि अंदर भी सीसीटीवी लगा होता है। तो पुलिस ने जब देखा कि वो बैग कौन लेके आ रहा था, तो उसके बाद फिर जो मौके पे ही जवान थे, क्योंकि कुछ भी संदिग्ध उन्हें नहीं नजर आ रहा था। लेकिन शुरुआत में पुलिस ने सबसे पहले तो उस इलाके को खाली कराया और वहां पे बैरिकेडिंग कर दी, और फौरन उसके बाद जब शंका हुई कि इसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता, कुछ गलत नहीं हो सकता, तो मौके पे मौजूद एक पुलिस वाले ने खुद ही बैग को ओपन करके जब देखा तो अंदर से कुछ, अब तक की जानकारी के मुताबिक, कि अंदर से कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है, और पुलिस ने उस शख्स की भी पहचान कर ली है जिसका बैग है। शायद उसका बैग वो वहां रह गया या किन परिस्थितियों में रह गया, पुलिस ये अब से थोड़ी देर बाद उम्मीद है कि आइडेंटिफाई कर लेगी और साथ साथ पता लगा लेगी। जी। Okay, so they're yet to identify whose bag this is, but what Himanshu is telling us, and this is important, Himanshu is telling us that right now the investigation has confirmed that there's nothing dangerous really in the bag. But kyunki, and this is of course a very highly sensitive area, because of that, in fact, you are seeing the necessary precautions of barricades being put up in that entire area. This bag had a police sticker, and right now verification is on to identify whose bag it is, but no dangerous material found.